Bonjour, bienvenue. C'est Dr. Ajay Sahani, the Bharati Vidyapeeth Institute of Management and Research. C'est 14h12, c'est le 21 juin 2023. Ça va bien? Bon, et on commence. सो आज फ्रेंच पे गपशप पे हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंच एक्सेंट्स एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंच एडजेक्टिव्स. सो फ्रेंच एडजेक्टिव्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. द टाइप्स ऑफ फ्रेंच एडजेक्टिव्स, उनकी प्लेसमेंट, पोजीशन, कैसे उनकी फॉर्म चेंज होती है. वैसे लैंग्वेज लर्निंग में हर एक ही नई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट फ्रेंच एडजेक्टिव्स आर सो इम्पॉर्टेंट. एंड फ्रेंच एक्सेंट्स की हम लोग पहले बात कर चुके हैं. I'll just devote this particular sheet towards it. So accents के spelling French में same है, a, se, a, n, t, s, and we call it as accent. Now this forward slanting is called accent aigu. In English it is acute. Then backward slanting is called accent grave. That's grave in English. And then this particular accent in the shape of a topi, this is called circumflex or circumflex, or it is also called chapeau. Chapeau in French is hat. Now this particular symbol we call it cédille. Why cédille? Because it is only put under C, and when you put this under C, the sound of C will be s, and this two dot, this is called tréma. And when you put it on a vowel or any particular, say here I have put it on I, so both these two will be pronounced as separate entity. So यहाँ पर मैं AI को A नहीं read करूँगा like as per our rule, because there is a trema here and we will pronounce it as mice, that's maize. Now French accents, why French accents? Number one, they are the part of the spellings. Then they change the sound of the vowel on which they are put. So that means you put them only on a vowel, and then they are also used as a beautification. Because कुछ answers मुझे मेरे प्रोफेसर से नहीं मिले, मैंने अपने आप ही answers create किए. Because whenever you are teaching a particular language, आपको स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए. सो दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट ब्यूटिफिकेशन, जैसे अगर आप देखो ये सारे एक्सेंट्स हमारे जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन वॉवल ई. ओनली ई इज प्रोनाउंस्ड एज अ. एक्यूट एक्सेंट इट्स ए. ग्रेव एक्सेंट इट बिकम्स ए. विद circumflex इट ऑल्सो बिकम्स ए. नाउ हेयर द क्वेश्चन अराइजेस कि ये भी ए है एंड दिस वन इज ऑल्सो ए. Then why? So it is just a part of it. Any word that comes with a grave accent on E, you have to learn it accordingly. मैं ऐसा criss cross नहीं कर सकता. For example, there is a word in French, frère. Frère is brother. Now I can't write frère like this कि भाई grave accent और circumflex दोनों का ए sound है. No, this is wrong. Same is with this word fenêtre. Now fenêtre in French is window. Now I can't write it instead of by putting a chapeau कि भी मैं थे grave accent ला दिया. That is not going to work. If it is a chapeau, you will put a chapeau here. That is a part of the spelling. And then you have C cédille एदे थल्ले सीधे थल्ले, so you pronounce it as s. So this is about accents, and generally these are put on the vowels. Not generally, that is the rule. And if I put OU here, it's or. Now जे मैं U दे उत्ते grave accent पा दिया, दा एदी जे जड़ी pronunciation हैगी ऊ ही रहनी है by and large, but it means where. ठीक है जी. So at the siga accents. Now we come to adjectives. Sheet number 2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ मैं adjectives ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ adjectif. Now here मैं फ्रेंच लिखिए Pierre est un étudiant. Pierre is a student.
Il est un étudiant intelligent. Il est un étudiant. देखो L ਇੱਥੇ connect हो गया, T ਇੱਥੇ connect हो गया, N ਇੱਥੇ connect हो गया. So this is how one word connects to another. Il est un étudiant. मैं ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ pronounce ਕਰ ਸਕਣਾ. Il est un étudiant. Depend ਕਰਦਾ ਹੈ. According to the mood, according to your fluency. If you say il est un étudiant, perfect. If you say il est un étudiant, it's okay. So you can break or you can go in a flow. Both are correct. Then I write intelligent. INS ਇਹ ਸਾਡਾ EL ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਐ ਟੈ ਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ E ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ intelligent intelligent. So he is an intelligent student. Now see the placement of the adjective. It is after the noun, unlike English where intelligent is before the noun. Same is with Spanish, Italian, Portuguese and Latin as well. So similarly I have Elan etudiant. Elan is a student. Now if you remember, UN changes to UNE. Both of them mean a or an. ठीक है जी. Now when I replace Elan with a pronoun, that is L एट्यूडियंट नाउन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ he is a student, she is a student, so student remains constant. Now in French you put an E for masculine it is without E and for feminine you will put an E. That is what the concept is. Now same thing happens with adjective. If you notice here, intelligent is the masculine form and for feminine I need to put an E. So where it was intelligent, the sound here will be intelligent. The t sound will give me an idea that this is in the feminine form and that is what the rule is. So adjective changes according to the noun it qualifies. Now let's put this into plural. Il the plural ho gaya sada il and this is changes to sont. Remember the conjugation of verb être, to be. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Plural of un is they. Étudiant, you will put an S for plural and it will be silent. So you can say ils sont des étudiants, consonant followed by a vowel, the sound is Z. And now this is important again, intelligent will carry an S. This is where we have to be very careful in French adjectives. It changes according to the noun in gender and in number as well. Now let's put this into plural. L, that means L, they feminine. Mano ke bhi Elen te odi seliyan. Elles sont des étudiantes. See, E, intelligente. Because feminine plural हैगा, so you will put es. Elles sont des étudiantes intelligentes. Now if I say elles sont des étudiantes intelligentes, so it becomes very difficult phonetically. Even I'll have a lot of stress to put here if I want to come up with a sound. Let's see, étudiantes intelligentes, it doesn't really come out so well, so you can avoid this z here. So when you speak French, thoda system hi apna mouth apna jada pura phonetic system हैगा, because our sounds originate from
deep down from the abdomen. So when you come up with the sound scientifically, your system won't accept it. So you can always put it separately. But here you can say L son des étudiantes. Here it makes quite clear the sound, and then you can separate it. And since you are pronouncing des étudiantes, that the sound is giving me an idea that this is plural they and this is with s, and then I have this son sound coming. So this denotes the format of the verb, that this is in plural format. Otherwise it becomes very difficult. Intelligent here as well, intelligent here as well, and the person who is listening to you, how would he decode that this is singular or plural? He is going to decode through son and des étudiantes, the sound here. Fine. So that means we have one format of adjective is masculine singular, second is masculine plural, third form is feminine singular, and fourth format is feminine plural, right? Corresponding to, if you see here, intelligent, intelligente, intelligent feminine masculine plural, and intelligente feminine plural. So I have these rules written here for you. That becomes very easier. So very easy for you, and you can download this and take a printout and store in for your records. So French adjectives change according to nouns, gender and number they qualify. Second rule, most of them will have E for feminine and S for plural. This rule applies to adjectives that end in consonants and vowels except adjectives ending with E. Example, bleu. Now here this is your vowel, you will put an E. Noir, bleu is blue and noir is black color, and you put an E. The same thing that I have given you an idea as far as adjectives are concerned. Then you have, when adjectives end in S or X, there is no change in masculine singular and plural. For example, you have a color gray, we call it as gris. Now this remains the same for masculine singular and masculine plural. This is what this rule says, right? In case an adjective ends with E, there is no change in masculine and feminine forms. For example, I'll give you this particular color, which means red. This is used in English also, rouge. OU is oo, and after G you have E, the sound of G is J. So rouge, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ E already ਹੈਗਾ. That means feminine singular and masculine singular the form same रहेगी. ऐ नहीं कि भी ਇੱਥੇ E ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ E ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ. No, rouge is rouge whether you are using for a feminine noun or you are using for a masculine singular noun, but for plural you will put an S. चौथा रूल हैगा साडा, the masculine form of adjectives ending in EL, EIL, then IEN, ET in feminine forms change to ELLE, EILLE, IENNE, ETTE respectively. That means EL साडा change हो जाएगा ELLE, EIL, ILLE and so on. Let's see some examples. Cruel, cruel, right? Coquet, coquette, ETTE. Ancien, ancienne. Pareil, pareil, right? So ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢੂੰਡੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਰੂਲ ਨੰਬਰ 5 ਸਾਡਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. C. Now deliberately I have made this sheet in a color format. So adjective
This is adjectives in French. Avant le nom. Nom means noun. And avant is before. So before the noun, you will use these adjectives generally that describe the intangibilities like petit, grand. These are opposites. Petit is small, grand is tall or big, bon is good, mauvais, au is o, ai is a. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ mauvais. Mauvais is bad. Now entire eau is pronounced as o. The rule is eau and au, they both are pronounced as o. ठीक है जी, जिस तरह साਡਾ एक्सप्रेशन ਸੀਗਾ au revoir, see you, so o. And aujourd'hui भी ਸਾਡਾ word ਸੀਗਾ au. So beau is beautiful and jolie pretty, long horizontally ਲੰਬਾ, court short. ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ. autre ਅਦਰ, nouveau new, jeune young. ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ vieux old, gentil kind, gros fat, faux is false. Then après le nom. ठीक है, après तो कुछ याद आया ਤੁਹਾਨੂੰ, après demain, ਡੇ ਆਫਟਰ ਟਮੋਰੋ. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ. ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ रिपीट कर रहे हैं, so that you keep on repeating these sounds. जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा सीखोगे. Repetition is the essence of language learning. And then you have pour les dates. Pour is for dates. Dernier, er is a, I is e, and after e you have two consonants, the sound is a. ऐसा साडा expression बन गया dernier. Dernier means last. Pro ch is, guess करो, guess ਦਾ फ्रेंच साडा हैगा इक्विवेलेंट deviner. थोड़ा guess करके भी चलो, deviner is to guess. So ch is sh, ain साडा ए और अ. So the rule is थोड़ा ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ वाला nasal concept आएगा AIM AIN, ठीक है जी, EIM ਜਾਂ EIN. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IN ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. that is also or ਐ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. so it becomes so easy if you know the rules. so it's prochain or prochain. Premier is first. nationalité बड़ा कनेक्ट हो रहा है इंग्लिश वर्ड ਦੇ ਨਾਲ. ਕੋਗਨੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ. ਕੂਲਰ ਕਲਰ, ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਗੂ ਇਜ਼ ਟੇਸਟ, ਸਟੀਲ. ਵਾਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਵਲਿਕ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆਈ ਦੇ ਮਾਫਿਕ, ਐ ਈ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ. ਸਟੀਲ. ਫੋਰਮ, ਫੋਰਮ ਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ. ਫੋਰਮ ਫੋਰਮ. appartenance, a par t ਨਾ ਸ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ. ਸੇ ਅਪਾਰਟਨਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੀ ਹੈਗਾ. ਅਪਾਰਟਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇ ਈ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਸ. Appartenance means appearance, ठीक है जी. so these are the nouns referring to these particular things. Adjectives. These are the adjectives that refer to the dates, like here pour les dates. for nationalities, color, religion. ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ. ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
avant le nom, and these ones après le nom, after the nouns. So dates, nationality and religion. Then number 3 ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਵੀ ਨੇ very close to English. Certains adjectifs changent le son des phrases quand ils sont avant ou après le nom. Very important rule here ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੋਵਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਂ ਤਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤ। ਸੋ certain adjectives change the meaning. Song, you can guess sense, or technically it's meaning. So change the meaning of sentences, phrase जैसे कहते हैं इंग्लिश में. So phrase is a sentence in French. Quand, when they are before or after the noun. On this particular rule application is here. देखो, c'est un bon étudiant, right? Now here bon refers to the level, that means he is a good student पढ़ाई लिखाई च। c'est un étudiant bon, ਜੇ ਮੈਂ bon ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ étudiant ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਵਿੱਚ, then bon here refers to generous, kind, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ। un voyageur grand. Now see voyage, English में ऐसो voyage करने वाला, voyageur, EU is a, and OI, when you have OI in a word or you have OY, so treat it as I only. Y जैसे मैंने आपको बताया था, I की sound और Y की sound same है, so this is wa, this is also wa, OY also. So voyageur, voyageur, but मैं इसको voyageur नहीं कर सकता, your system won't accept it, so it's something like voyageur, so something, a bit of separation is required here in between these two. So voyageur grand, यहाँ पर हो गया डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा। देन यू हैव un grand voyageur, beaucoup का मतलब है a lot, ऐसा ट्रैवलर जो बहुत ट्रैवल करता है, राइट, un grand voyageur. देन यू हैव un petit magasin, magasin is shop, right, a small shop, that means not important, इतनी famous नहीं, ऐसी छोटी मोटी shop है मेरी। un magasin petit, now this is small. Now the first one is giving you the importance and this one is giving you the size. So this was about the placement of some adjectives. If you put before, the meaning is different. If you put after the noun, then its meaning will also change. So this is what I have written here for you in sheet number 5. It says the placement of adjectives. The qualificative adjectives are generally placed after the noun. A few adjectives that describe the physical characteristics of a person, place or a thing are generally placed before the noun. So these are those: grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, long, court, large, ancien, laid, joli, bon, mauvais, étroit, dernier, meilleur, méchant, nouveau, beau, gentil, premier. Grand, big or tall. Petit, opposite of that, small, short. Gros, fat. Mince, thin. Jeune, young. Vieux, old. Long, court, short. Large, broad. Ancien, old. Laid, ugly. Joli, pretty. Bon, good. Mauvais, bad. Étroit, narrow. Dernier, last. Meilleur. So see, EI is A, and we discussed that rule. If you have I double L, the sound will be Y. Meilleur. EU is a. Meilleur, better. Méchant, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ, that's your homework.
Nouveau, again I leave it to you. OU is oo, see, and EAU is O. Right, so these vowelic combinations are very important. So grammatical terminology में इनको diphthongs कहते हैं. That means a combination of two or more vowels, right? So beau, gentil, premier, right? So try to pick out the meanings of these and start making sentences. Now the exceptions, again, rules are there, and exceptions are also there with any rule. So the following 5 adjectives, remember 5 only, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी थानू. The following 5 adjectives have 2 masculine forms. That means ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 adjectives ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 masculine forms ਹੈਗੇ ਨੇ. That is again because of consonant and vowel. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ gender concept, right, and ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ vocabulary, gender concept, vocabulary, say then verbs ਦੀ conjugation. पूरी लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ that holds true for Spanish, Italian, Portuguese as well. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬਸ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਊਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ we have vowel and consonant. So I have these 5 adjectives written here: beautiful, handsome, new, crazy, soft, old. Now this particular matrix, it shows this is a masculine, this is masculine noun beginning with a vowel or h, and then feminine, masculine and feminine. See, as far as feminine is concerned कोई क्लेश नहीं हैगा. ਦਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਵਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਨਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਵਲ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਵੋਵਲ ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਨਾਓ ਆਵਰ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਬੋ. It changes to bell if this particular noun begins with a vowel. For example, मैं सीधा example ते आ रहा. It is il est un nouvel étudiant. I won't write nouveau. See, nouveau is this particular format, N-O-U-V-E-A-U. This is, if I put it here, it will be il est un nouveau étudiant. So nouveau étudiant, so it becomes very static. Now to connect this, I will use this particular format, this one, nouvelle. See, masculine, before masculine singular noun beginning with a vowel. So I will use nouvelle, this one, nouvelle. So it is connected with a. So il est un nouvel étudiant, right? So it becomes in a flow, right? So now if it is a feminine, it becomes elle, a, tune, and I will use this format, nouvelle étudiante. So remember this always. So beau changes to belle. Same way I want to use beautiful or smart or handsome, I will use this format, belle, étudiant with masculine. So it changes to belle, but if it's a feminine noun beginning with either a vowel or a consonant, उत्थे कोई पंगा नहीं हैगा. मैं belle ही use करांगा, belle, belle, L, A, tune, L, A, tune, belle étudiante. ठीक है जी.
ਫੈਮਿਨਿਨ ਸਿੰਗੂਲਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਸਿੰਗੂਲਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾउन ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਪਲੂਰਲ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਨਾउन्स ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਮਿਨਿਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਵਲ ਹੋਏ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ। ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਵੈਦਰ ਵੋਵਲ ਔਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਨਿਨ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੀ ਬੋ ਬੈਲ ਬੈਲ ਬੋ ਬੈਲ ਨੂਵੋ ਨੂਵੈਲ ਨੂਵੈਲ ਨੂਵੋ ਨੂਵੈਲ ਫੂ ਫੋਲ ਫੋਲ ਫੂ ਫੋਲ ਫੂ ਮੋਲ ਮੋ ਮੂ ਮੋਲ ਮੋਲ ਮੂ ਮੋਲ ਵੀਰ ਵੀਐਲ ਵੀਆਈ ਵੀਰ ਵੀਆਈ। So these are the 5 adjectives that you are going to use in different format. Be very very particular. So what I really covered in today's session is we talked about accents, we talked about adjectives, we talked about adjectives, their placement before and after the noun, how their meanings change when we place them before the noun and after the noun. And the adjectives are generally put after the noun. The adjectives will change according to the noun and according to their gender and their number, and it's generally E for feminine and you put an S for plural, both masculine and feminine. And then we talked about these 5 adjectives which has 2 forms in masculine singular depending upon beginning of the noun either by a vowel or a consonant. And I wrap today's sessions by saying that always be very very particular about the gender concept, vowel and consonant of a noun, vocabulary and conjugation. So these 4 are the backbone of French language. So keep on revising and we will meet again in our next class on French pe Gupshup. And coming back to a very small point in Gupshup, that day I was discussing about I showed you अखरोट दिखाया था मैंने आपको, and it is very much connected with the neuroplasticity because जब आप एक foreign language सीखते हो आपका ब्रेन उतना expand होता जाता है। expand होने का मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं है ब्रेन का साइज। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी जैसे प्लास्टिक हमारा एक्सपैंड होता है, सिमिलरली जब आप नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपके नए न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल पाथवेज बनते जाते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, और जो पुराने सिनेप्सिस हैं वो आपके यूज़ जो नहीं हो रहे, सो दे विल कीप ऑन डाइंग। एंड साइंस ने ये बता दिया है कि हम किसी भी एज में सीखना बंद नहीं करते। हाँ, यंग कम जब हम बच्चे होते हैं ऐसे 5 से 8 साल में हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप अगर बड़े हो गए हो सो आप अपने ब्रेन पे काम नहीं कर सकते हो। सो लैंग्वेज लर्निंग helps you to create new neural pathways, and you not only come up with the more productivity in whatever language, whatever work you are doing, डेली काम काज में जो भी आप काम कर रहे हो, बिकॉज आपका ब्रेन उतना शार्प हो रहा है। एंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट होल ब्रेन थिंकिंग, बट दिस होल ब्रेन थिंकिंग इज कनेक्टेड विद ऑफ कोर्स योर न्यूरो प्लास्टिसिटी, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, NLP। उसके बारे में भी मैं अब आपसे अलग से एक वीडियो शेयर करूँगा। सो द पॉइंट इज़ जो भी हमारे नया हम सीखते हैं सो हमारे नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते जाते हैं, and that keeps us ever young, enthusiastic and energetic, and we take life in a more enjoying manner. So this is Dr. Ajay Sahani. Goodbye from now on. Ciao.